Welcome to my channel. Today we have to study the trigonometry. So पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि what is the trigonometry. So trigonometry is made by three words. Okay. So first word is the tri. Tri means three. Tri means three. Second word is the gono. Gono means angle. And the third word is metry, means measurement. Measurements. तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर के बना है। ये तीनों वर्ड्स क्या है? ट्राई मतलब थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेजरमेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी हम किसी ट्राई एंगल्स के मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब ट्राई एंगल्स मेजरमेंट के बारे में बात होती है तो हमें क्या आता है? ट्रायंगल के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली बेस्ड होता है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब हम सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है और उसकी कितनी आइडेंटिटीज हैं और उसको हम लोग कितने इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और किस तरह से उसका हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। सो जैसा मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल, ये राइट एंगल है एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, मींस हाइपोथेटिकल। द प्रॉब्लम इज दैट व्हिच वन इज द परपेंडिकुलर, व्हिच वन इज द परपेंडिकुलर, दिस वन और दैट वन। आपको पता है कि परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक होगा, बट जनरली क्या होता है ना कि हम उस चीज को परपेंडिकुलर हम उसी चीज को लेते हैं जो हमें दिखता है। जैसे मैं सरफेस पे परपेंडिकुलर, कोई भी वर्टिकल थिंग्स स्टैंड ऑन अ सरफेस, दैट मींस दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। सेम एज इट इज हम हमेशा कंसीडर कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दिस इज डिपेंड ऑन द एंगल्स। व्हिच वन एंगल्स? दिस टू एंगल्स। So these two acute angle decided कि which one side is the perpendicular. Suppose if we take to this angle, then this is the perpendicular. Otherwise, suppose you want to take this angle, then the perpendicular is this. So perpendicular length is changeable. This is depend on the acute angles. Those who are taken by. अब हम ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जब हम स्टार्टअप देते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिसाइड इन दोनों एंगल से होता है। जब हम ये एंगल्स लेते हैं बेटा तो परपेंडिकुलर ही होता है। सपोज दैट योर साइट विजिट फ्रॉम दिस पॉइंट, देन दिस इज द परपेंडिकुलर। यहां से आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, यहां से आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज चेंजेबल, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कितने होते हैं? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिफ्थ सेकेंड, and the last is cosecant. So this 6 trigonometric ratio। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? मुझे जहां तक लगता है कि सभी लोग यही बोलेंगे कि आर्यभट्ट। बट आर्यभट्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक्स फादर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फादर इज नोन एज द हिपार्कस। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द हिपार्कस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था तो हिपार्कस ने किया था। इसके बाद उसके बारे में मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय द आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट ने सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में दिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने वाला जो होता है ना वही होता है। जैसे रॉबर्ट हुक
इज द फादर ऑफ द सेल। पहले उन्होंने बताया, लेकिन आज सेल के बारे में इतना कुछ जाना जा चुका है, उन्होंने जो बताया उससे कहीं ज्यादा, बट उन्होंने स्टार्टअप में बताया जिसकी वजह से ही इज द फादर ऑफ सेल। सेम एज इट इज हिपार्कस ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, सो हिपार्कस इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये साइन, कोसेक, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, ये सभी को इंट्रोड्यूस आर्यभट्ट ने किया है। अब ये सभी टर्म्स जो होते हैं ना, ये सभी इसी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन, ये सभी इसी के साइड के रेशियो है। साइन, कॉस, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ये सभी साइड्स के रेशियो है, इसी साइड्स के रेशियो है। अब देखते हैं कौन कौन किसके साइड के रेशियो है। तो साइन इज द रेशियो ऑफ, साइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ perpendicular by hypotenuse. I don't know about who is the perpendicular because the angle is decided which one is the perpendicular, but now sine is the perpendicular by hypotenuse. So sine किसको कहते हैं? Perpendicular by hypotenuse को कहते हैं, means P by H, perpendicular by hypotenuse. Cosine is the ratio of base by hypotenuse. Tangent is the ratio of perpendicular by base, and cotangent is the ratio of just reciprocal to the tangent, means ratio of base by perpendicular, and second is reciprocal of the cosine, that means it is hypotenuse by base, and cosecant is the reciprocal of sine, this is what? Hypotenuse by perpendicular. So this is the all 6 trigonometric ratio. But perpendicular and base not decided. Perpendicular and base is not decided, and this one is terms is not decided. That's why sometimes you have seen in the NCERT book. NCERT book में आप देखेंगे तो वो terms अलग लिखेगा आपका। क्या रहता है वहाँ? Opposite sides of adjacent angles. Opposite sides of this angle is known as perpendicular. So if you take this one side, then this is the opposite one, and this is the adjacent one. So opposite of angle by hypotenuse. Sin आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है बेटा कि opposite side of the given angle divided by hypotenuse. There is not mentioned the perpendicular by hypotenuse. There is mentioned the opposite side of the given angle by hypotenuse. Okay, and the cos is what? Adjacent sides of the given angle by hypotenuse. So आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, वहां पे perpendicular by base, base by hypotenuse, perpendicular by base ऐसा नहीं लिखा। वहां पे आपको देखेंगे, आप जब उसके पेजेस को रीड करेंगे तो कहीं पे मेंशन नहीं होगा perpendicular base, वहां एक ही टर्म्स मेंशन होगा, opposite of this angles divided by hypotenuse, adjacent of this angle divided by hypotenuse, opposite of angles divided by the adjacent of these angles, मतलब टेंजेंट b by b, तो उसकी जगह ये टर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसे लर्न करने का क्या तरीका है? तो बहुत सारे कोटेशंस बहुत ही फेमस है, और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ आपको। This is the perpendicular by base. It is written as sine. This is what? Cos. This is what? Tan. And this is the opposite of sine is what? Cosec, sec, and cot. So by these quotations, you always remember कि the sine is what, cos is what, tan is what, cosec is what, sec and cot is what. Okay. So how can learn the? So this is very easy to learn by a quotations. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड इट्स वेरी फेमस कोटेशंस, बहुत जगह पे आपने सुना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P by H is indicate to the sine, base by H hypotenuse is indicate to the cos, perpendicular by base is indicate to the tan, hypotenuse by perpendicular is indicated to the cosec, hypotenuse by base is indicated to the sec, and base by perpendicular is indicated to the cot. So this is the trick to learn
trigonometric ratio. Okay. And one more quotation according to NCRT. In NCRT, there is given S represent to the sine, C represent to the cos, T represent to the tan. So sine represent to opposite sides of the angles divided by hypotenuse. Cos is represent to the opposite, means adjacent. This is what? Adjacent. This is the A. This is the A. Adjacent sides by hypotenuse. And T represent to tan, and this is written as opposite divided by adjacent of the angles. How can determine? So this is also determined by this trigonometric, this triangle. This is the angle. Suppose this is the angle. Okay. So this side is the opposite of this angle, and this side is the adjacent of this angle. And this is what? Hypotenuse. So according to this, sine theta is represent to opposite by hypotenuse. Opposite sides of these angles divided by hypotenuse. Cos theta is represent to adjacent by hypotenuse. And tan theta is represent to opposite by adjacents. Okay, so this is the trick to learn trigonometric identities. So ka to. This is so ka to. So by these quotations you also learn it. Okay, so ka to. Right? So this is the one more trick. Okay, and this is based on the NCRT. So thank you. Next videos we have to learn in the next video. हम लोग नई चीज जानने को, नई चीज सीखने को आएंगे, और उस वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे, जो स्क्वायर आइडेंटिटीज है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग।